Hello everyone, welcome to the SBI Securities weekly wrap podcast. So Indian equity markets witnessed a correction this week with the benchmark indices Nifty and the Sensex correcting 1.1 and 1.3% respectively. लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो मिड एंड स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज में गिरावट थी, लेकिन वो सिर्फ 0.9% मिड कैप इंडेक्स नीचे था एंड स्मॉल कैप इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया एंड ऑलमोस्ट 1.1% करेक्शन से बंद हुआ. The key reasons behind this fall this week was on Friday we had tensions between Israel and Iran flaring up once again, with Israel targeting Iran's nuclear facilities. एंड इसके चलते हमने देखा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस में शार्प अप मूव देखा गया, तो 7% ऊपर था एट अबाउट $74-75 पर बैरल. एंड इसके चलते क्रूड सेंसिटिव सेक्टर्स, एविएशन, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, टायर्स, पेंट्स में करेक्शन देखा गया. ऑटो सेक्टर में भी और रेयर अर्थ मैग्नेट्स की अनसर्टनिटी है. सो चाइना इज़ नॉट सप्लाइंग द रेयर अर्थ मैग्नेट्स इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज एंड दैट इज़ लीडिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन गेटिंग impacted from July. So the auto index also closed 1.5% lower for the week. One other reason also is that the supply has increased of stocks, so the intensity of bulk and block deals has picked up, with promoters and private equity funds looking to book profits. तो इस हफ्ते हमने देखा काफ़ी ब्लॉक डील्स हुई एशियन पेंट्स में, आदित्य बिरला कैपिटल, जुबिलेंट फूड, जुबिलेंट इनग्रेविया, जुबिलेंट फार्मोवा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, सुजलॉन एनर्जी, प्रीमियर एनर्जीज, सी इन्फो सिस्टम्स जो कि मैपमा इंडिया है. तो इन सब में प्रमोटर्स और प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने स्टेक सेल किया है. Coming to the key corporate news this week, so first of all, United Spirits was in focus as the liquor prices are expected to rise sharply by about 30 to 50% in Maharashtra, as the state government has hiked the excise duty, and this will impact United Spirits the most. Almost 20 to 25% revenue Maharashtra से आता है, तो United Spirits and other liquor stocks focus में थे इस week. AWL एग्री बिजनेस और पतंजलि फूड्स में तो ये पॉजिटिव रहेगा फॉर द डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर्स, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड क्रूड एडिबल ऑयल्स पे कट की है फ्रॉम 20% to 10%. तो ये डिफरेंस बढ़ गया है बिटवीन क्रूड एडिबल ऑयल एंड रिफाइंड एडिबल ऑयल के इंपोर्ट्स में, तो डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए पॉजिटिव रहेगा. मैक्रो न्यूज़ की बात करें तो इंडियाज़ CPI cooled down to 75 month low in May, and it was along expected lines. म्यूचुअल फंड डेटा की बात करें तो इनफ्लोज कम हुए, ऑलमोस्ट 22% मंथ ऑन मंथ फॉल था मई में, लेकिन SIP इनफ्लोज देखें तो काफ़ी स्टेडी रहे हैं. इस मंथ में भी 26,688 crores का SIP inflows था. Coming to the major orders won by the companies, so NBCC received 520 crore worth of orders for construction of school buildings and other facilities. Torrent Power received a 2,650 crore order from Solar Energy Corporation for a solar power project. Shakti Pumps and Crompton Consumer received orders worth 115 crores and 101 crores respectively from the Maharashtra Energy Development Agency. This is for the solar pumps. In terms of calls given this week, so in pick of the week we have recommended India Shelter Finance. It's a housing finance company specializing in the affordable housing finance segment and extends home loans to borrowers in the low to mid income groups. ये कॉल दिया है हमने 889 रुपीज़ पे with a target of 1022,
एंड पिक ऑफ द डे में हमने संदूर मैंगनीज रेकमेंड किया है एट 477 रुपीज़ विद अ टारगेट ऑफ 550 रुपीज़. This company is into mining of manganese and iron ore as well as manufactures ferroalloys and also present in the coke and energy segments. Coming to the key events next week, so three central banks, major central banks will be in action. बैंक ऑफ जापान 17 जून को अपनी पॉलिसी अनाउंस करेगी. यूएस फेड 18 को अपनी पॉलिसी अनाउंस करेगी. बैंक ऑफ इंग्लैंड का पॉलिसी 19 जून को है. तो ये 3 दिन ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स फोकस में रहेंगे. मिडल ईस्ट टेंशंस भी मार्केट फोकस करेगा एज वेल एज रशिया यूक्रेन फ्रंट पे अगर कोई फ्रेश डेवलपमेंट आता है. देयर आर नो मेजर डोमेस्टिक ट्रिगर्स, so these two factors as mentioned before would be dominating the news flow next week. This was all about the weekly market podcast. Thank you for listening. For key corporate actions in next week, kindly refer to our weekly wrap report. The link to view the report is shared in the description box below. Thank you and have a happy weekend. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.